नमस्कार साथियों, वीएम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम विपिन, आप सभी का वीएम क्लासेस में स्वागत करता हूं। मैं अपना ब्रीफ देना चाहूँगा। मैं आपके बेसिकली अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूं। जी हाँ, मां नर्मदा का उद्गम स्थल ओरिजिन पॉइंट आपके अनूपपुर जिले से ही है। इसके साथ ही सोन और जोइला नदियों का उद्गम स्थल ओरिजिन पॉइंट आपके अनूपपुर जिले से है। ऐसी पावन धरा से मैं बिलोंग करता हूँ। वीएम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारी जो है फ्लूइड मैकेनिक्स की क्लासेस कंटिन्यू चल रही थी कन्वेंशनल के। ये रहा ब्यूटीफुल सा कैनवास आपके स्क्रीन के ऊपर, जिस पे हम जो है अपनी कलाकृतियां उकेरते हैं। सो शैल वी प्रोसीड, गो अहेड। यस, तो इसमें बोल रहा है अ सिटी वाटर सप्लाई मेन, वाटर सप्लाई मेन is 1000 meter long, is 1000 meter long and delivers a flow and deliver a flow of 100 liter per second between two reservoir with a between two reservoir with a head difference of head difference of 15 meter. It is proposed to increase, it is proposed to increase the flow by 30% by adding another adding another pipe of the pipe of the same diameter as same diameter as the main from the main from the upstream reservoir in the upstream reservoir in parallel and joining it parallel and joining it to the main at a suitable function suitable function. Estimate the length of estimate the length of the additional pipe and the head and the head at the junction relative to the downstream reservoir water surface. Assume the length of two parallel pipes
to be same. Also, all pipes can be assumed to have the same friction factor F as shown in figure. चलिए दिखाते हैं. 15 meter. Here the free surface L3, L1, L2. Point star A, B. Here it is the J and nearby C. एक बार मैं क्वेश्चन आपको रीड कर देता हूँ आपके सुविधा के लिए. बोल रहा है a city water supply main is 100 meter long and delivers a flow of 100 liter per second between two reservoirs with a head depth of 15 meter. It is proposed to increase the flow by 30% by adding another pipe of the same diameter as the main from the upstream reservoir in parallel and joining it to the main at a suitable function. Estimate the length of the additional pipe and the head at the junction relative to the downstream reservoir water surface. Assume the length of the two parallel pipes to be same. Also, all pipes can be assumed to have the same friction factor F as shown. Okay. ये पूरा जो है आपको आसान किया हुआ है फिगर के साथ क्वेश्चन में. ठीक है, चलिए इसे सॉल्व डाउन करने की कोशिश करते हैं. तो सबसे पहले बिफोर इंट्रोडक्शन ऑफ द पाइप हमारे पास डार्सी का जो है हेड लॉस होता है एफ एल नॉट बी नॉट का स्क्वायर अपॉन 2 times of g into d. So here we have f l naught q naught square upon 2g e raised to power 5 pi by 4 square. Now friction head is equal to k l naught b naught square. K is equal to value f upon 2gd5 pi by 4 square. Here we have the value L naught is equal to 1000 meter, discharge 0.1 meter cube per second, liter per second का मीन्स ये हुआ. देन आफ्टर दैट डिस्चार्ज के अलावा हमारे पास HF है 15 मीटर. So put all the value if we put to get the
answer over here for the K. 15 divided by 1000 into 0.1 square. Here it will be 1.5. Now 15 is equal to K times of 1000 multiplied over Q नॉट का स्क्वायर. नाउ ये फर्स्ट कंडीशन हो गई जब आपका पाइप इंट्रोड्यूस कर रहे थे. नेक्स्ट वाली, आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ पैरेलल पाइप, पैरेलल पाइप और पाइप EJ and pipe PJ. Okay, so HF1 is equal to HF times of 2. So here we have the value F1 L1 V1 square upon 2G V1. Now F2 L2 V2 square over the 2 times of G V2. Now D1 बराबर D2 and L1 बराबर L2. F1 is equal to F2, V1 is equal to V2, Q1 is equal to Q2. So moving ahead, Q3 वैल्यू हमको प्राप्त होगी डिस्चार्ज Q1 और Q2 का कॉम्बो, which is 2 times of discharge Q. Now moving ahead, after this we have the total head loss. HL is equal to 15 FL1 V1 square upon 2G3 plus FL3 V3 square upon 2G3. Now the L1 plus L3 is equal to 1000. L3 is equal to 1000 minus of L1. So the 15 is equal to FL1 upon 2G Q3 square upon 4 pi by 4 square P5 plus F1000 minus L1 divided by 2G pi by 4 square P5 into Q3 square. Now the value over here, value K is equal to F upon 2G pi by 4 square into P to the power 5. Value of K multiply with the L1 by 4 plus 1000 minus L1 into Q3 square is equal to 1515. Now the K times of 1000 minus 3L1 by 4 multiply with Q3 square. Remaining value is to be the same. Now equating in the equation हमने जो earlier निकाली हुई है, so यहाँ पे हो जाएगा K multiply with 1000 minus 3L1 upon 4 Q3 square. एक वैल्यू हमारी 15 is equal to K times of 1000 Q नॉट स्क्वायर थी, तो
A multiply with 1000 into Q naught square. Alright, now down the ground we have to further move ahead. Getting the value over here, 1000 minus 3L1 upon 4 is equal to 1000 into Q naught over the Q3 square. Now put the Q3 is equal to 1.3 Q naught to 1000 minus of 3L1 upon 4, 1000 into Q naught upon 1.3 का square. Now L1 is equal to L2 is equal to 544.4 meter. Now head at the junction above the downstream reservoir water surface elevation वो कैलकुलेट करते हैं तो Hg is equal to Hf3 के बराबर, whose value is to be F times of 1000 minus 544.3 Q3 square upon 2G into 5 by 4 square into e to the power 5. Value of Hf3 is equal to 11.55 meter. That's final. We have to calculate it. Okay. Now next question की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं. क्या है क्वेश्चन? ये बोल रहा है a metal plate of a metal plate of 10 millimeter thickness and 200 millimeter square is hung so that it can swing freely about the upper horizontal edge, the upper horizontal edge. A horizontal jet of water, a horizontal jet of water of 20 mm diameter, 20 mm diameter impinges with
its axis axis perpendicular and 50 mm and 50 mm and 50 mm below the edge of the hinge of the hinge. Okay, then and kept and kept it steadily. steadily steadily inclined at 30 degree to the vertical. Find the velocity of find the velocity of the find the velocity of the jet jet if the specific weight if the specific weight of metal of metal is 75.54 किलो न्यूटन मीटर क्यूब। ऑलराइट, ये है क्वेश्चन आपका। चलिए सॉल्यूशन देखने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आपका एक रेक्टेंगुलर प्लेट बना लेते हैं। ये रही प्लेट, ये है हिंज पॉइंट जिसके अबाउट ये लगी हुई है। यहाँ पे जेट टाइप से कुछ आ हुआ है जो हिट कर रहा है प्लेट को। ओके, ओके, इट्स 50 mm। now the weight is to be here on W1, the whole length is to be 200 millimeter।
Okay, now here there is to be the angle over here on the plate. Force F is applied on a particular angle 30 degree. Alright, now axis distance is taken. Now here we have the angle theta is equal to 30 degree, x is equal to 50 upon cos of 30 degree. Now weight of the plate क्या हो जाएगा साथियों, which is rho g v, rho g v. So here put the values over here. तो ब्यूटीफुल सा हमको W वेट मिल जाएगा 75.54 मल्टीप्लाइड विथ 10 क्यूब. यह हमको दिया हुआ है वैल्यू रो जी की डायरेक्टली. वॉल्यूम 0.01 इंटू 0.2 इंटू 0.2. After this we have to get the W is equal to 30.22 Newton. Now area of jet, एरिया ऑफ जेट क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा I अपॉन 4 टाइम्स ऑफ 20/1000 square, which is 0.000314 meter square. Now the next part we have to take the force exerted by jet जो है वो normal direction में ले लेंगे. तो F normal is equal to rho times of area into velocity square into sin का कौन सा डिग्री होगा, 60 डिग्री एंगल के साथ में. तो here 1000 into 0.000314 the value of area, v square sin 60 डिग्री बच्चे बच्चे जानता है अभी तक √3/2. Fn क्या आ जाएगा हमारा 0.272 टाइम्स ऑफ v स्क्वायर. नाउ अब जो है मोमेंट किसके अबाउट लेंगे, अब हिंज के अबाउट. तो हिंज पॉइंट जो है ना आपका ओरिजिन पॉइंट होता है हमेशा. अबाउट हिंज पॉइंट हम जो है मोमेंट ज़ीरो कर लेते हैं. तो हो जाएगा W इंटू 0.1 इंटू साइन ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल टू F फोर्स इंटू 0.05 इंटू 1/, क्या हो जाएगा, cos of 30 degree. Now finally after putting the value, W is 30.22 into 0.1 into sin 30 1/2 is equal to Fn की वैल्यू क्या है 0.272 with the multiplication of n मतलब v square into 0.05 upon cosine of 30. The final value we have to got the velocity of jet is
9.81 meter per second. Such a easy question, but in the exam, sometimes they will ask the 20 marks easy question. तो आपको अपनी नज़र बस खुली रखनी है, आपका आ जाना है ऑटोमेटिकली। ठीक है, इतना ही रखते हैं आपके सेशन को। क्या करना है आपको? बहुत सिंपल सा काम करना है। वीएम क्लास जो है ना हमारी, उसे लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स तक इसे पेनिट्रेट करना है। जीवन में साथियों हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और प्रगति के शिखर पर सदैव अग्रसर रहिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे साथियों।